This question is from GATE 2024. ठीक है. So this question about SPNE सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम एंड इसके रिगार्डिंग एक कंफ्यूजन चल रही है दैट whether the answer is enter accommodate or enter fight or both. Okay, the answer given by GATE is A, enter accommodate, which is correct. ठीक है, let me explain you कि how do we see that. Okay, so game में we have a incumbent, okay, which is already there in the industry, and we have a challenger, okay, who is deciding between entering or not entering, okay, and based on that, incumbent has to decide whether he will be accommodating the entry of the challenger or will he be fighting the challenger. Okay, so I have summarized the payoffs and game here. Okay, so अगर challenger enter करता है, then I, incumbent, gets to choose between fight and accommodate, and if he does not enter, then game वहीं finish हो जाती है, and he gets, and the players get 1 and 2 respectively, जहां पर this 1 is for challenger and 2 is for incumbent. Okay, so as we know कि SPNE solve करने के लिए what we do backward induction. Okay, so जब आप backward induction कर रहे हो, incumbent has to decide between इस सब गेम के अंदर incumbent has to decide between fight and accommodate, and दोनों जगह he is getting same payoff. Okay, so after that you move to the bigger sub game, which is the game itself, and here game can either go here or here. Now challenger has to see कि वो क्या चूज करेगा. Okay, so स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो एंटर चूज कर रहे हैं यहाँ पर, एंड दे आर सेइंग कि एंटर फाइट और एंटर एकोमोडेट दोनों आंसर है. ओके, विच इज नॉट राइट. ओके, अगर सपोज करो एंटर फाइट आंसर होता तो इट शुड सेटिस्फाई कि नो बडी शुड डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेटेजी. ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट नो बडी शुड डेविएट फ्रॉम देयर स्ट्रेटेजी. ओके, इन द इक्विलिब्रियम. तो सी दिस, अगर इनकम्बेंट चूज कर रहा है फाइट, ओके, तो क्या चैलेंजर को अपनी स्ट्रेटेजी डेविएट करने पर हायर पे ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इफ ही चूजेस एंटर ही गेट्स 0, बट इफ ही deviates and move towards do not enter, then it gets 1. So clearly challenger has a incentive to deviate. Okay, उसे 0 से 1 पे ऑफ मिल जाएगा, which means enter comma fight is not Nash equilibrium. Okay, तो ये नैश इक्विलिब्रियम ही नहीं है, एसपीएनई तो उससे आगे का कॉन्सेप्ट है. बेसिकली एसपीएनई में आप फर्दर एक लेयर है नैश इक्विलिब्रियम और एसपीएनई के बीच में, जहां पर नैश इक्विलिब्रियम्स को छांट करके उनमें से फर्दर एसपीएनई चूज किए जाते हैं. ओके, तो ये नैश इक्विलिब्रियम भी नहीं है. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एंटर एकोमोडेट. ओके, सो यहां पर if incumbent is accommodating, then and challenger chooses enter, then he gets 2 as payoff. Challenger को मिलेगा 2, and if he deviates to do not enter, okay, then he gets 1. यहाँ मिल रहा है 2, इधर मिल रहा है 1. That means challenger has no incentive to deviate. उसे उसके लिए यही स्ट्रेटेजी बेटर है. What about incumbent? तो अगर challenger चूज कर रहा है enter and incumbent tries to deviate, ओके, देन ही गेट्स 1 विच इज सेम. तो इसके पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है डेविएट करने का. इंसेंटिव कब होता है, जब हायर पे ऑफ मिलेगा. तो यहाँ पर उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं. ओके, सो ही इज ओके विद एकोमोडेट ओनली. ठीक है, तो देयर फोर एंटर कॉमा एकोमोडेट इज द एसपीएनई हियर. ओके, बिकॉज बिकॉज एक्चुअल में हमने जब बैकग्राउंड एक्शन लगाया था, देन इट वाज सेटिस्फाइंग फॉर एंटर एकोमोडेट ओनली. ठीक है, फर्दर इसे चेक करने के लिए मैं आपको इस फॉर्म में दिखाता हूं गेम को. यहां पर हम निकालेंगे सिर्फ नैश इक्विलिब्रियम, एंड आई शो यू कि एंटर कॉमा फाइट वाज नेवर अ नैश इक्विलिब्रियम इटसेल्फ. एसपीएनई तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. ओके, सो गेम सेम है, एंड आई नो आपको आता है कि इसमें नॉर्मल फॉर्म में नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकाले जाते हैं. सो
मैं पे ऑफ बता देता हूँ आपको। एंटर कॉमा एकोमोडेट पर 2,1 है, ये रहा एंटर कॉमा एकोमोडेट। एंटर कॉमा फाइट पर है 0,1 विच इज हियर, ओके। एंड अगर चैलेंजर डू नॉट एंटर करता है तो गेम वहीं खत्म हो जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इनकम्बेंट क्या कर रहा है। पे ऑफ रिमेन्स 1,2, तो दोनों यहां पर होंगे 1,2। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट नैश इक्विलिब्रियम क्विकली। सो इफ इनकम्बेंट प्लेस एकोमोडेट, एंटर करने पर 2 मिलेगा विच इज हायर देन 1। एंड इफ इनकम्बेंट प्लेस एफ, then 1 is higher than 0. Okay, what about challenger? If What about incumbent? If challenger plays enter, then between he's in incumbent is indifferent between the two. And if challenger plays do not enter, then again he gets 2 at both the places. Okay, incumbent. So notice that enter comma accommodate and do not enter comma fight, ये दोनों नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंटर कॉमा फाइट वॉज नेवर नैश इक्विलिब्रियम। ओके, तो वो एसपीएनई तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज एसपीएनई इज बेसिकली सबसेट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। ओके, सो एन एनी इज द बिगर सेट। सो in this game, enter comma fight was never even Nash equilibrium. So it cannot be SPNE. Hence, the answer given by Gate is correct. It is enter comma accommodate. This is not even Nash equilibrium. Okay, I hope आपको ये क्लियर हो गया।